अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो आई फॉरगॉट टू से दैट वेलकम टू वीडियोलॉजी भारतीय शो। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। हमने कंटिन्यू कर रहे अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अब पहले सबसे इसकी वीडियो सुन लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। Types of genetic resources. Dear student, in previous lecture we have discussed about genetic resources, its different forms and different themes of genetic resources. Now in this lesson we will discuss about different types of genetic resources. We categorize these genetic resources into following types. The first type is plant genetic resources, the next one animal genetic resources, third is forest genetic resources, aquatic genetic resources, genetic resources of microorganisms, and the last one invertebrate genetic resources. Plant genetic resources. We can define plant genetic resources as any material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture, such as seed, tubers, mature plant, etc. Plant genetic resources include all our agriculture crops and some of their wild relatives because they possess valuable traits. These resources contribute to people's livelihood by providing food, medicines, feed for domestic animals, fibers, clothing, shelter, and energy. Next type is animal genetic resources. Animal genetic resources is used to include all animal species, breeds, and strains that are of economic, scientific, and the cultural interest to humankind in terms of food and agriculture production for the present or for the future. It means all the heritable material which is present in different species or the different breeds of animal, and all those genetic material must have some actual or the potential value for the future or for the present. All those genetic material is known as animal genetic resources. There are more than 40 species of animals that have been domesticated or semi-domesticated during past 10 to 12,000 years, which contribute directly and indirectly. Some common species include cattle, goats, pigs, chicken, horses, buffaloes, and many other domesticated animals. The next type is forest genetic resources. Dear student, as its name indicates that it contains all heritable material or all genetic material of woody plants or different types of shrub. This genetic material is included in forest genetic resources. So we can define these resources as forest genetic resources or tree genetic resources are genetic material of shrubs and trees species of actual or potential value. These resources are essential for forest dependent communities who rely for substantial part of their livelihood on timber and non-timber forest for food security, domestic use, and income generation. The fourth type is aquatic genetic resources. These resources include all genetic resources living in water. By that we understand fish, different marine mammals, and aquatic plant and all other aquatic organisms. All these genetic resources or all these aquatic genetic resources have many nutritional value. Genetic resources of microorganisms. Genetic resources of microorganisms mean genetic material of actual or the potential value from microorganism. Microorganisms of agriculture interest play a key role in
in many aspects of food production. For example, soil fertility, crop nutrition, biocontrol, and biofertilizer. It is also important with regard to conservation of food products as well as in the production of processed food such as milk, cheese, etc. So we can say that different heritable material or genetic material of the actual or potential value for the future or for the present, which is present inside this microorganism, is known as genetic resources of microorganisms. And the last type is invertebrate genetic resources. As it's indicated by its name, it comprises all genetic resources or all material of actual or potential value of invertebrates. Invertebrates include a great number of species that perform a valuable function in agro ecosystem. For example, a honeybee. We collect honey from honeybees, and it also play a role of pollination. So that's all about different types of genetic resources. Thank you. तो फ्रेंड्स हमारी इस टॉपिक की वीडियो कंप्लीट हो गई और हम चलते हैं अपनी रीडिंग मटेरियल की तरफ। यहाँ पर हमारा ये सेकंड टॉपिक है, तो हम यहाँ पर अपने हैंडआउट्स पे आ जाते हैं सबसे पहले और ppts को भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में दोनों चीज़ें डाउनलोड करने वाली है और चलिए हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम चल लेते हैं अपने हैंडआउट्स पर फर्स्ट। ठीक है, तो अब हैंडआउट्स हमारे खुल रहे हैं। फिर मेरे को हमारे हैंडआउट्स खुल रहे हैं और हम चलिए जो पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज of field crops comprise crop species and their wild relatives, varieties, land races, and genetic variation within the species. The genetic heritage of crops is stored in the different plant parts, seeds, and tissues. Plant genetic resources are used by farmers and scientists as the raw material for breeding new plant varieties and in biotechnology, and are reservoir of genetic diversity which act as a buffer against environmental and economic change. Okay, plant genetic resources constitute the foundation upon which agriculture and world food security is based. But many plant genetic resources which may be vital to future agricultural development and food security have been lost to us in this century. Okay, and more are threatened. Country reports written by 155 governments for the Leipzig conference indicate that recent losses of diversity have been large and that the process of erosion continues. सही। उसके बाद of major concern is the irreversible loss of genes, the basic functional unit of inheritance and the primary source of the variation in the appearance, characteristic and behavior among plants. Okay, the diversity of life on Earth is essential to the survival of humanity. The conservation and utilization of plant genetic resources is key to improving agricultural productivity and sustainability. It contributes to food security and poverty alleviation. Okay, so let us move ahead. तो ये है एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, द टर्म एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ANGR is used to include all animal species, breeds and strains that are of economic, scientific and cultural interest to mankind in terms of food and agricultural production for the present or the future. Another equivalent term increasingly used is farm animal genetic resources. ठीक है, these are more than 40 species of animals there are more than 40 species of animals that have been domesticated.
ठीक है, और that have been domesticated, ठीक है, और सेमी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 10 to 12,000 years, which contribute directly through animal products used for food and fiber, and indirectly through functions and products such as draft power, ठीक है, draft power और manure और transport, store of wealth, etc. Common species include cattle, sheep, goats, pigs, chickens, horses, buffalo, but many other domesticated animals such as camels, donkeys, elephants, reindeer, okay, and rabbits, etc. are important to different cultures and regions of the world. Forest genetic resources. FGR are the heritable materials maintained within and among trees and other woody plant species that are of actual or potential economic, environmental, scientific, or social value. ठीक है, they are crucial to the adaptation and protection of our ecosystem, landscapes, and production system. So yet are subject to increasing pressure and unsustainable use. Conservation and sustainable management of FGR is therefore a must to ensure that present and future generations continue to benefit from forest and trees. सही है. उसके बाद genetic diversity is needed in order to ensure that forest trees can survive, adapt, and evolve under changing environmental conditions. It also maintains the vitality of forest and provides resilience to stresses such as pests and diseases. Pets नहीं है, ये pest है, ठीक है, pest and diseases, ठीक है. Aquatic genetic resources include all genetic resources living in water. By that we understand fish, cyclostomes, mussels, and decapods, marine animals, aquatic plants, and all other water-dwelling organisms that populate marine, coastal, or inland waters are kept in aquaculture, seawater, and freshwater fish, but also crustaceans, mussels, and other seafood belong to the most important sources of protein for human consumption worldwide. ठीक है, as the basis of the fishing industry, they play at the same time a major role in socio-economic terms, particularly in developing countries. Local fishing and the related branches of production guarantee the income of a large part of coastal communities. ठीक है, invertebrate and micro-organism genetic resources. ठीक है, the term of micro-organism as it is understood here encompasses fungi, for example Gracia mycorrhizae, edible mushrooms, yeast, microalgae, protozoa, bacteria, archaebacteria, mycoplasmas, and viruses. Okay, microbes play a critically important role in the cycling of nutrients in terrestrial and aquatic ecosystem globally. Marine microbes are responsible for approximately half of the global primary production and play a huge role in the cycling of carbon, nitrogen, phosphorus, and other nutrients. Okay, so okay, an invertebrate is any animal without a backbone. सही. Earthworms, nematodes, and insects are referred as invertebrates. Invertebrates include a great number of species that perform valuable functions in agro-ecosystem. सही हो गया. उसके बाद small, out of sight, and uncharismatic these animals may be, but their significance is enormous. Some larger soil-dwelling invertebrates such as earthworm, ants, termites have been described as ecosystem engineers, and they create the physical structures needed to maintain healthy soil communities and for basic soil processes such as water infiltration and storage and sequestration and cycling of carbon. They help maintain
the chemical fertility needed for plant growth. Okay, this was quite lengthy. Okay, so जनाब अब हम चलते हैं आगे अपनी पीपीटीज की तरफ, अपने बोनस पॉइंट की तरफ. ठीक है, उससे चूँकि हमें बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ जाता है सब कुछ, एज यू नो दैट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, इनमें हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज यही इसमें पूरे जो मॉड्यूल में डिस्कस होगा. ठीक है, प्लांट तो कौन सी टाइप्स है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्वेटिक जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनवर्टिब्रेट्स जेनेटिक रिसोर्सेज. ये हमने हैंडआउट्स में भी तो पढ़ा है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये जैसे के बीन्स वगैरह. ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, are the raw material that farmers and plant breeders use to improve the quality and productivity of crops. ठीक है, they can be defined as any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture. For example, seeds, tubers, mature plants, etc. सही है. Animal genetic resources. Animal genetic resources is used to include all animal species, breeds and strains that are of economic, scientific and cultural interest to humankind. ठीक है, in terms of food and agricultural production for the present or the future. सही. इसके बाद हम आगे चलते हैं फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज में. हमारे पास आ गया फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज आर द हेरिटेबल मटीरियल्स मेंटेन्ड विद इन एंड अमंग द ट्रीज एंड other woody plant species that are of actual or potential economic, environmental, scientific or social value. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है aquatic genetic resources. Aquatic genetic resources also comprise all water dwelling genetic resources. ठीक है, जैसे कि मैरीन लाइफ. सही है ना, उन्होंने यहाँ पर उसी की तो एग्जाम्पल ली है. ठीक है, उसके बाद आगे चल लेते हैं. आगे यहाँ पर है जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, invertebrates genetic resources. Invertebrates include a great number of species that perform valuable functions in agro ecosystems. ठीक हो गया. उसके बाद में हमारा ये टॉपिक हो जाता है एंड. थैंक्स लॉर्ड. ठीक है जनाब, ये टॉपिक हमारा एंड हो गया. इस पर हम लिख देते हैं डन. ठीक है, इसको हम डन कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आगे चल लेते हैं. खैर हमारा ये इंक्लूड हो ही जाएगा. ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं. अब यहाँ पर हमारा आगे है अगला टॉपिक. हम इसका पहले वीडियो देख लेते हैं. एज सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं पिछले मॉड्यूल्स में जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ जेनेटिक रिसोर्स, एंड इसके साथ ही हमने डिफरेंट टाइप के जेनेटिक रिसोर्सेज को डिस्कस किया, लाइक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल genetic resources, invertebrate and microorganism genetic resources, forest genetic resources, और साथ साथ हमने इन genetic resources के डिफरेंट सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया. इस मॉड्यूल में हम सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इन जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों होती है. सो इन दिस मॉड्यूल वी डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll read about classification of resources. Here we classify resources into three main categories. First category is natural resources, second is human resources, and third is man-made resources, or we can call these resources as capital resources. First of all, we'll discuss natural resources. Natural resources
refers to the materials or substances such as minerals, forest, water, and fertile land that occur in nature and can be used for economic gain. They cannot be manufactured by humans, although they can be influenced. You cannot magically build a tree, however, you can grow one or even a forest. The second category, human resources or human capital, refers to people who make up the workforce of an organization, business, sector, or economy. Human resource is simply an other way of saying people who work or have job. And the third category, which is man-made resources or the capital resources, this category refers to the goods made and used to produce other goods and services. For example, machinery in factory or different items that this factory makes. All these different categories are the different classes of resources, and here we will discuss just natural resources. So genetic resources are sometimes called the first resources of natural resource on this planet, the other being land, air and water. Dear student, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि रिसोर्सेज की 3 टाइप्स हैं, और जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्स को डिस्कस किया और हमने ये कहा कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि मैन मेड नहीं होते, ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जिसमें एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, लाइफ, फिर तमाम चीज़ें आती हैं. तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज इसी नेचुरल रिसोर्सेज के फर्स्ट रिसोर्स कंसिडर होते हैं, जबकि बाकी रिसोर्सेज में एयर आ सकता है, वाटर आ सकता है, एयर, वाटर और लैंड, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, लेकिन मेन प्रायोरिटी जो इसमें है वो बाकी जेनेटिक रिसोर्सेज को शामिल है. सो वी कैन कंसीडर दीज जेनेटिक रिसोर्सेज as first resource of the natural resources. The diversity of genetic resources for food and agriculture, for example plants or crops, animal, aquatic resources, forest, micro-organism and invertebrate, and we know that all these are different types of genetic resources which we have discussed in the previous module in types of genetic resources. All these plays a crucial role in meeting basic human food and nutritional need. और ये भी हमने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है इन जेनेटिक रिसोर्सेज में, और जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे. तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये ह्यूमन की जो बेसिक फूड नीड है, न्यूट्रिशनल नीड है, इसको किस तरह से फुलफिल करती है, किस तरह से हमें फूड प्रोवाइड करती है. तो ये भी इन रिसोर्सेज की सिग्निफिकेंट है कि ये तमाम रिसोर्सेज, चाहे वो प्लांट रिसोर्सेज हो, चाहे एनिमल रिसोर्सेज हो. प्लांट रिसोर्सेज में हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट, वेजिटेबल और डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं. इसी तरह से एनिमल्स की बात करें, हम मीट, मिल्क, बोन, मसल्स, डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. एक्वेटिक रिसोर्सेज में फ़िश हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है, और भी डिफरेंट जो मैरीन और वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड हैं. इसी तरह से फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है, और लेकिन अगर साथ हम फूड की बात करें, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हम इन फॉरेस्ट से हासिल कर रहे हैं. इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड इस तरह से इन्वर्टिब्रेट्स, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में इन तमाम जो टाइप्स हैं जेनेटिक रिसोर्सेज की, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और तमाम इन डिफरेंट टाइप्स के
रिसोर्सेज की जो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम जेनेटिक रिसोर्सेज हमारी फूड और न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल कर रहे हैं। It is essential for maintaining and enhancing the efficiency and the resilience of production system, as well as contributing to sustainable diets and to the delivery of ecosystem services such as pest and disease regulation. Genes are linked from generation to generation of all living matter. Therefore, attention to genetic resources means attention to the vast diversity among and between species of animals, plants, and microorganisms. Dear student, as you know that what are genes? Genes are basically the hereditary unit, and these genes are linked from generation to generation. These genes pass the genetic information from one generation to other generation. So through these genes, both generations are linked to each other. So we can say that genes are the link from generation to generation of all living matter. So if we're talking about the conservation of genetic resources, or if we're simply talking about genetic resources and we give attention to these genetic resources, then it means that we are giving attention to different plants, animals, microorganisms on their gene level. हम इसके साथ हम genetic resources को conserve करने का मतलब ये है कि हम उन genes को भी conserve कर रहे हैं जो कि generation to generation एक link build up कर रही हैं. Genetic resources must be maintained as an investment for the future, and that's a very critical point, very important पॉइंट कि हम इन जेनेटिक रिसोर्सेज की मेंटेनेंस पर के लिए भरपूर कोशिश करें कि हम इनको मेंटेन रखें, कंजर्व करें. वी शुड कंजर्व एंड वी शुड मेंटेन दीज जेनेटिक रिसोर्सेज ताकि हम फ्यूचर में इन जेनेटिक रिसोर्सेज से फ़ायदा ले सकें और हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी इन जेनेटिक रिसोर्सेज से हमारी तरह फ़ायदा ले सकें. जेनेटिक रिसोर्सेज are of tremendous practical and historical significance for human life, from daily survival to generating the wealth of nations. Yet their crucial role in supporting human society is frequently overlooked and undervalued. Genetic conservation is an integral part of much broader activity concerned with protecting the many plants, animals, microorganisms, and communities of organisms that help to mold and stabilize the environment and maintain the quality of air, water, and soil. जब हम genetic resources को conserve करने की बात करते हैं, then it means that we are talking about, or we are trying about how to conserve different type of living organism, different type those living organism may be different animal, different plants, different microorganism. तो इन एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम कंजर्व कर रहे हैं और इनकी कंजर्वेशन से हम अपने इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम अपनी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लेवल पर हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. अगर हम यहाँ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी के अलावा डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, चलो ये एक इंडस्ट्री लेवल पर आ जाता है. अगर हम यहाँ पर सिर्फ इकोसिस्टम की बात करें तो डिफरेंट टाइप के इन्वर्टिब्रेट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, इस तरह से बायो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ये बायो फर्टिलाइजर ये हमारी सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं. तो इस तरह से, और इसी तरह से अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स, एज वी नो दैट प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं. प्लांट्स आर सोर्स ऑफ
फ्रेश ऑक्सीजन फॉर अस, और ये हमारे इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री हो जाता है इस तरह से। तो ये जो अब इस तरह से प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, एंड सेम लाइक एनिमल्स। तो ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं, इनके जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, इट मीन्स दैट हम अपने इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, हमने अपने एयर, वाटर एंड सॉइल जो क्वालिटी थी उसको मेंटेन किया है। Here we will discuss about conservation, the conservation of genetic resources, that why there is need to conserve these genetic resources. Conservation ensure the future generation will benefit from Earth's biological resources. Conserving genetic resources is a means of safeguarding the living material exploited by agriculture, industry, forestry, and aquaculture to provide food, feed, medicines, fiber for clothing, and furnishing fuel for cooking and heating, and food and industrial products of microbial activity. कंजर्वेशन, जब भी हम किसी जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, इट मीन्स दैट हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उन तक उन रिसोर्सेज को पहुंचा रहे हैं, उन तमाम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को पहुंचा रहे हैं, ताकि वो जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। और इस तरह से ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज की कंजर्वेशन है, ये एक तरह से इन तमाम लिविंग मटेरियल को हेल्प कर रही है, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि जो डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं वो उन तक ना पहुंच सकें। और जैसे एक्सप्लॉइटिंग बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड एक्वाकल्चर टू प्रोवाइड फूड, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक एक कांस्टेंट सप्लाई पहुंचती रहे, तमाम जनरेशंस तक मेडिसिन्स, फूड, जो कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि हम इन जेनेटिक रिसोर्सेज हासिल कर रहे हैं वो पहुंचते रहें। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया, फूड, फीड, मेडिसिन, fiber for clothing, furnishing, fuel for cooking and heating, and the food and industrial products of microbial activity, and all these are different products which we get will get from the use of these different type of genetic resources on the different level. So dear students, in this module you have learned about significance of different type of genetic resources. You have learned about that how different type of genetic resources are playing an important role in this environment, in this planet, and why we need to conserve these genetic resources, and if we don't conserve these genetic resources, then it means that we are going to deprive our future generation from their basic need, from these basic biological resources. In next module, you will learn about plant genetic resources for food and agriculture. Thank you. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ठीक है, हम लोग अब हैं टॉपिक नंबर 3 पर। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। चलें जी, इसके हैंडआउट्स और पीपीटीज को कर लेते हैं डाउनलोड। अब चलते हैं हम लोग यहाँ अपने हैंडआउट्स जो है वो स्टडी कर लेते हैं पहले।
indicate that in 2009 there were around 1 billion, okay, 1 billion chronically hungry people in the world, an increase of about 200 million since the World Food Summit in 1966. It is estimated that the number of hungry people increased by over 100 million due to the food price crisis of 2007 to 2008 alone. Most of the worst affected people, about 75% live in rural areas of developing countries and depend directly or indirectly on agriculture for a large part of their livelihoods. ठीक है, up to 70% decrease in world agricultural production over today's levels will be required to meet the food demands of the estimated 9.2 billion people in 2050. A major share of this productivity increase will have to come from the use of PGRFA to produce higher yielding, more nutritious, more stable and more eco-efficient crop varieties. ओके, तो हमारा हैंड आउट डन हो गए हैं, इसमें से हमें काफ़ी कुछ समझ में आया। ठीक है, तो हम चलते हैं कि पीपीटीज के बारे में। पीपीटीज एज यूजुअल इज़ अ बोनस। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं हम अपने बोनस पॉइंट की तरफ। सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके अंदर आ गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, क्लासिफाइंग रिसोर्सेज के अंदर नेचुरल, ह्यूमन, मैन मेड। ठीक है, सिग्निफिकेंस में आ गया जेनेटिक रिसोर्सेज आर समटाइम्स कॉल्ड द फर्स्ट रिसोर्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दिस प्लेनेट, द अदर्स बीइंग लैंड, एयर एंड वाटर। अच्छा, सही हो गया। द डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, प्लांट जो कि हैं प्लांट और क्रॉप्स, एनिमल्स, एक्वेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, माइक्रो-ऑर्गेनिजम्स एंड इनवर्टिब्रेट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग बेसिक ह्यूमन फूड एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड resilience of production systems, as well as contributing to sustainable diets and to the delivery of ecosystem services such as pest and disease regulation. सही होगा। Genes are the link from generation to generation of all living matter। ठीक है, उसके बाद हमारे पास therefore attention to genetic resources means attention to the vast diversity among and between species of animal, plants and microorganisms। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं genetic resources must be maintained as an investment for the future। Genetic resources are of tremendous practical and historical significance for human life, from daily survival to generating the wealth of nations, yet their crucial role in supporting human society is frequently overlooked and undervalued। अच्छा, सही हो गया। Genetic conservation is an integral part of much broader activity concerned with protecting the many plants, animals, microorganisms and communities of organisms that help to mold and stabilize the environment and maintain the quality of air, water and soil। Okay, इसके बाद आता है conservation ensures that future generation will benefit from Earth's biological resources। ठीक है, conserving genetic resources is a means of safeguarding the living materials exploited by agriculture, industry, forestry and aquaculture to provide food, feed, medicines, fiber for clothing and furnishing, fuel for cooking and heating and the food and industrial products of microbial activity। ओके जनाब, हमारे पास अब जाके मुझे सारा टॉपिक जो है क्लियर हुआ है प्लीज़ को पढ़ के। ठीक है, वीडियो से मुझे बहुत कम क्लियरेंस आई थी टॉपिक के बारे में बातों की। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे हैंडआउट से बहुत अच्छे से ज़्यादा थोड़े फास्ट समझ आए, ज़्यादा बेहतरीन मुझे पीपीटी से पढ़ के समझ आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वीडियो ना देखें, नहीं, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक आते आते हमें कुछ बातें इकट्ठी होती हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं, और इसीलिए हम जो है ना लास्ट वाला जो पॉइंट है ना बोनस पॉइंट जिसमें कहते हैं पीपीटी, उसको हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहूँगी कि मुझे तो बेहतरीन तौर पर समझ आ गया। ठीक है, अब ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1। ठीक है, तो इसकी वीडियो लेसन जो है ना वो देख लेते हैं हम।
Plant genetic resources. Dear students, in this module we will learn about what are plant genetic resources and different kinds of plant genetic resources. Plant genetic resources can be defined as any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture, such as seed, tubers, and mature plant, etc. Along with soil and water, plant genetic resources constitute the foundation upon which agriculture and world food security are based. Plant genetic resources are used by farmers and scientists as a raw material for breeding new plant varieties and are reservoir of genetic diversities which act as a buffer against environmental and economic change. प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न सिर्फ क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं बल्कि साथ साथ ये तमाम स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Germplasm of a crop may be defined as the sum total of all hereditary material such as all the alleles of various genes present in a crop species and its wild and weedy relative. It is also termed as genetic resources. Germplasm are living genetic resources such as seed or tissue that are maintained for purpose of animal or plant breeding, preservation, and other research purpose. These resources may take the form of seed collection stored in seeds bank, trees growing in nurseries, animal breeding line maintained in animal breeding programs, or the gene banks. Germplasm collection is important for the maintenance of biological diversity and the food security. Plant genetic resources can be broadly divided into two types depending upon the stage of their domestication. The first type is cultivated plant genetic resources. These plants are grown by humans and need special attention, while genetic resources are those plants which are grown in wild and do not need any special attention. Alternatively, they may be termed as indigenous or exotic on the basis of their place of origin. Indigenous plants. These are native plants. These include plants that have developed or occurred naturally or exist for many years in an area. The second one, that is the exotic plant. Exotic is a plant that has been introduced to an area from outside its native range accidentally or purposefully. Here are different kinds of plant genetic resources. The first type is land races, obsolete varieties, varieties in the cultivation, breeding lines, and the last one is wild form and the wild relatives. Land races. A land race is a domesticated, locally adaptive, traditional variety of a species of animal or plant that has been developed over time through adaptation to its natural and cultural environment of agriculture and due to isolation from other population of the species. We can define it as a crop cultivar or animal breed that has been developed through traditional farming practice for many years in a particular locality without influence from modern agriculture science. There are some general features of these land races. The first one is it is morphologically distinctive and identifiable, and the next one is it is generally adaptive to and has a reputation for being able to withstand the condition of the local environment, including climate change, disease, and cultural practices. Obsolete varieties. Obsolete varieties are a kind of derived genetic resources. Improved varieties of recent past are known as obsolete varieties. These are the varieties which were popular earlier and now have been replaced by new one. इनमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल व्हीट वराइटीज़ की है जिसमें K68,
K65 एंड PP591 जो कि सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल वीट वराइटीज़ थी। ये सब टॉल वराइटीज़ थी जिनको बाद में हाई यील्ड ड्वार्फ मैक्सिकन वराइटीज़ ने रिप्लेस कर दिया। These varieties are well known for their attractive color and chapati making quality. Now those old one varieties are no more cultivated and just found in gene pool only. Thank you. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो खत्म होगी। अब हम चलते हैं अपने रीडिंग मटेरियल की तरफ। चलो हम अपनी रीडिंग कर लेते हैं। हमारी रीडिंग के अंदर हमारा 4th टॉपिक चल रहा है। देखा आप लोगों ने वीडियो से थोड़ा थोड़ा समझ आता है, इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा वीडियो से, क्योंकि एज यू नो दैट ये मेरे लिए भी न्यू है और आपके लिए भी टॉपिक सही है। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग मटेरियल की तरफ। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में हमारी रीडिंग मटेरियल पर ppts और ये हैंडआउट्स हैं, इनको कर लेते हैं डाउनलोड करने के बाद इनको पढ़ लेते हैं। सही हो गया, अच्छा वो खुल गया। चलो अब हम इसको कर रीड आउट कर लेते हैं। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रिप्रेजेंट्स अ सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी accumulated through years of evolution under domestication and natural selection. Principally, the genetic resources or germ plasm of plants come from wildlife or primitive form, plant migration in secondary forms. अच्छा, उसके बाद material bred through meticulous plant breeding programs. सही हो गया। Categories of germ plasm. germ plasm की categories हैं, there are 5 categories of germ plasm. Land races, और यहाँ पर 2 ही बताई हैं, ठीक है। Land races में है primitive cultivators which were selected and cultivated by farmers for many generations, ठीक है। Land races even respond to selection for high yield, but to certain extent. Since land races possess valuable alleles, their conservation is essential. The main drawback of land races are that they are less uniform and low yielders. अच्छा, उसके बाद आ गया land races have been collected in maize, sorghum, pearl, millet and many other crops, ठीक है। ये क्रॉप्स के नाम थे। अच्छा, obsolete cultivars, improved varieties of recent past are known as obsolete cultivars, ठीक है। These are the varieties which were popular earlier and now have been replaced by new varieties. These varieties have several desirable characters and constitute an important part of gene pool. सही हो गया। देन अब मेरे कुछ पॉइंट्स जो है ना वाज़े हो रहे हैं। अब उसके बाद अब चलते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। हमारा बोनस पॉइंट है ppts, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे अच्छे से समझ आ जाती है और इसका मतलब नहीं कि बाकी 2 नोट स्टेप्स को छोड़ दें, उसके बाद इसको पढ़ो तो फिर समझ आती है अच्छे से, ठीक है। चलें फर्स्ट अब इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं। व्हाट आर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज? सही। काइंड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सही। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फंडामेंटल नॉट ओनली इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बट ऑल्सो फॉर द very survival of the species in time and space. Plant genetic resources includes all our agricultural crops and even some of their wild relatives because they too often have valuable traits, ठीक है। उसके बाद plant genetic resources are components of biodiversity which sustains the mankind, ठीक है। उसके बाद kinds of plant genetic resources PGR, plant genetic resources can be broadly divided into 2 types depending upon the state of their domestication, ठीक है। Cultivated plant genetic resources, wild plant genetic resources. Alternatively, they may be terms as indigenous or exotic on their place of origin, ठीक है। Plant genetic resources और germ plasm of a crop consist of 5 types of material. यहाँ आगे सारी इसके types. Land races, obsolete varieties in cultivation, breeding lines, wild forms and wild relatives, ठीक है। लैंड रेसेस में आ गया हमारे पास लैंड रेस इज अ लोकल variety of a domesticated plant species which has
developed largely adaptation to the natural and cultural environment in which it lives. It differs from a cultivar which has been selectively bred to conform to a particular standard of characteristics. सही हो गया. Landers populations are often variable in appearance, but they can be identified by their appearance and have a certain genetic मेरे ख्याल में हो सकता है कि रिसोर्स, ठीक है, और मटेरियल हो सकता है, ठीक है. उसके बाद फिर ऑब्सोलीट वैराइटीज. दिस वैराइटीज वर डेवलप्ड बाय सिस्टमेटिक ब्रीडिंग एफर्ट वेयर once commercially cultivated but are no more grown. For example, wheat varieties K65, K68, PB, ये पोटाशियम और PB प्लम्बम होते हैं, तो ये 591. ठीक है. ओके देन 2 टाइप से इसमें डिस्क्राइब की गई. हो सकता है आगे भी इसके पार्ट्स हों अगले टॉपिक्स में, ठीक है, वहाँ पर आ जाए शायद. तो अब फ्रेंड्स सोच अच्छे समझ आ रही है, होप आप लोगों को भी समझ आ रही होगी. तो इस वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक्स अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है.